Students, this is Ikshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, in our previous video, we have already started with the chapter number 8, that is ratio, proportion and unitary method. So, in the first video, we have already discussed about the ratio. Now, in this video, we will learn what is proportion and unitary method. So let us go to the topic proportion. Now students, we have already discussed about ratio. Ratio is nothing but it is a comparison of two quantities by division method. Now what is proportion? Proportion is when two ratios are equal, they are said to be in proportion. Okay, so the statement is when two ratios are equal, then they are said to be in proportion. Now you have one example I have written here. You have 15:24 and 10:16. These two ratios I have taken. So now we have to just make them equal so that we can say that these two ratios are in proportion. So I have taken the ratio, so let us see how they become equal. Okay, so first let us take 15:24. So 15:24 can be written as how? 15/24, isn't it? So let us go for the lowest term here. Now if you have the common factor 3, then what will happen here? 3 5s are 15 and 3 8s are 24, isn't it? So this is your lowest term of the ratio. Now let us take the next ratio, that is 10:16. Now just write in fraction form. Then you have 2 as common factor. Now 2 5s are 10 and 2 8s are 16. Now what you can observe is this 5/8 and this 5/8 are same, isn't it? They are equal. So you can say that 15:24 and 10:16 are in proportion. Okay, so this way you can say that whenever you are given with a ratio, you can just see after taking out its lowest term, you can see that both the ratios are giving you the same fraction, that is 5/8. So now you can say that these two ratios are in proportion, that is 15:24 is equal to 10:16. Okay, so this way you can say that the statement implies when two ratios are equal, they are said to be in proportion. So you can see the two ratios are equal, therefore these two ratios are in proportion. Okay, तो इस तरह से हमें प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव करना पड़ता है. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी में दोनों रेशियोज का इक्वल होना ज़रूरी है. Now let us take another example where you can say that whether the ratios are proportional or not. Okay, so let us take the second example. Now see, I have taken another example of two ratios, that is 1:7 and 5:7. Now 1:7 can be written as 1/7 and 5:7 can be written as 5/7. Now this is only the lowest term, further you cannot do anything. ठीक है, तो ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया. तो आप अभी देख सक रहे हैं इन दोनों का वैल्यू जो है दिस इज नॉट सेम. सो देयरफॉर 1/7 is not equal to, तो not equal to कैसे लिखते हैं? इक्वल टू करके उसको हम कट करते हैं. So that is not equal to 5/7. Therefore 1:7 and 5:7, these two ratios are
not in proportion. Okay, not in proportion. So now you can again see when two ratios are equal, then they are said to be in proportion. Since these two ratios are not equal, that is why these ratios are not in proportion. Okay, so this way you need to proceed for your proportionality questions. Okay, so let us move to exercise 8.2 with this concept. So 8.2 हम चलते हैं और ये कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रख के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. Now see, in your exercise 8.2 you have to write true or false in the following ratios. So here first question is 6:9 is equal to 10:15 or not. Okay, so whether it is equal or not, that you have to find out, and you can go for your true or false statement. So first one is 6:9 is equal to 10:15, that you have to prove it. Okay, so let us see whether it is true statement or false statement. Now see here, I have written 6:9 and 10:15. So here you have been provided with this type of symbols, isn't it? So this means you are equal or not. So 6:9 you can write it like this, and you are getting the lowest term as 2/3. Then here also the 5 is a common factor, and you can go for 2/3. Now you can see 2/3 is equal to 2/3. Therefore 6:9 is proportional. See, this is proportional sign. Okay, proportional to 10:15. So this statement is true statement. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. तो प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह से आपको प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल दिया जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया? आपका ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो इक्वल हो गए हैं और इसीलिए ये रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू this ratio. Okay, so both the ratios are in proportion. So this is the true statement. So next one also you can do of your own. So second sum जो है इसको भी आपको proportionality you have to prove it. So you can go for the proportionality. Second question आप अपने आप कर सकते हो, है ना? 11/22 and 7/14. So here from orally we can make out 1/2 and 1/2. So both are in proportion. So this is also a true statement. Now let us move to the third one. Here 2:67 and 13:39. So from the sight only or observation only or orally we can say that 2/67 cannot we cannot go for the lowest term here. So 2/67 and this will become 1/3, isn't it? 1/3. So these two are not in proportion. So यहाँ पे proportion दिया है, तो ये जो statement हो गया ये false है स्टेटमेंट. तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप देखिए ये 2/67 इसको आप लोएस्ट टर्म नहीं कर सकते हो, एंड 13/39 का क्या हो जाएगा आपका 1/3. सो 2/67 इज नॉट इक्वल टू 1/3. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ कम टू द फोर्थ वन. 5:50 is proportional to 1:11. Again 5:50 will be 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर 1/11 हो जाएगा. Again these are not in proportion. So this is also a false statement. Okay, now let us move to this one. 5 kg upon 10 kg. So 5/10 becomes 1/2, and here you have 15 kilometer, 30 kilometer. So 15 2s are 30. Again this one is equal. Okay, so this is a true statement. तो ये E भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ F, G एंड H. सो ये वाले तीन आप अपने आप करोगे, मैं कोई हिंट भी नहीं दूंगी, क्योंकि यू कैन सी ऑल द
यूनिट्स आर ऑल्सो सेम फॉर ईच रेशियो। तो यहाँ पे मिलीमीटर मिलीमीटर है, यहाँ पे सेकेंड सेकेंड है, तो आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे लीटर लीटर एंड हियर ऑल्सो रुपीज रुपीज, हियर आवर्स सेकेंड सेकेंड. So you can easily go for this question and you can find out whether these statements are true or false. So I have already shown you how to do it. So you can proceed for this 3 questions of your own. Okay, so now let us go to second question. Now second question is determine x if 72 is to 112 is proportional to x is to 28. Okay, so let us just write how we can go for the determination of x. Now see students, we have written the whatever is given to you in this question. So numbers 72, 112, x, 28 are in proportion. That is 72 is to 112 is equal to x is to 28. So you have this question, isn't it? ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे इक्वल टू के बदले में आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया हुआ है. सो व्हाट आई हैव रिटन इज आई हैव टेकन द नंबर्स, सी 72, 112, x, 28 and I have written the statement as are in proportion. So I can write if they are in proportion, so this can be written as equal to this ratio is equal to this ratio, isn't it? Now what we did, we have written it in fractional form. तो ये देखिए, इसको मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया है, इसको भी मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया है. अब हम क्या करेंगे, अब हम x को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 72 into 28 and 112 is down. Okay, so this way we will go for the calculation. Now you can see the calculations. 28 1 ja 28, 28 4 ja is 112. Okay, now 4 1 ja 4, 4 1 ja 4. Now 3 is remaining, so 4 8 ja 32. So you have x is equal to 18. Okay, now your proportion will be, therefore 72 is to 112 proportional to 18 is to 28. So this way you can go for your second question. Now go for your third question. Here also you have been given with the numbers and these numbers are in proportion, and again you are going to find out x. So same way what we did in question number 2, we will follow that method only. Now see, I have written the same thing, 5, 21, 25 and x are in proportion. That is, you can go for this way, mathematical expression. Now this can be written in fractional form, 5 upon 21 is equal to 25 upon x. Now go for your cross multiplication, and here you can see 25 multiplied by 21 upon 5. So 5 ones are 5, 5 fives are 25. So here you have 5 into 21. So now you can just go for your x, that is 105. Okay, so this way you need to go for your calculations. Now in your fourth question, you have in a proportion, the first, second and fourth terms are 3, 5 and 25 respectively. Find the third term. Okay, so as you know that when we are writing the terms, जैसे इस तरह का हमने यहाँ पर टर्म्स लिखा हुआ है, ये जो टर्म्स है, तो पहले वाला फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड वाला सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये आपको पता है ना? ये तो आप इजीली आपको मालूम होना चाहिए कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. तो इस तरह से यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट टर्म लिखा है, सेकंड टर्म लिखा है, उसके बाद थर्ड टर्म आपको निकालना है. तो आप इन सब नंबर्स को कैसे लिखोगे, देखिए. नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन विथ, क्या दिया था आपको, फर्स्ट टर्म दिया था, सेकेंड टर्म दिया था और फोर्थ टर्म दिया था.
थर्ड टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने इसे किस तरह से अरेंज किया है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आई हैव रिटन एज एक्स एंड 25 इज द फोर्थ टर्म, इजंट इट। तो इस तरह से आपको जो भी टर्म्स निकालने होंगे वो इस तरह के अरेंजमेंट करने होंगे। आपको सेकेंड टर्म बोला होगा तो आप सेकेंड पोजीशन में आप एक्स लिखोगे। आपको फोर्थ टर्म बोला होगा तो आप एज इट इज फोर्थ टर्म के वहाँ पर एक्स लिखोगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर थर्ड टर्म निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमने थर्ड टर्म में एक्स लिख दिया है, ठीक है। नाउ एज यू नो दे आर इन proportion, so you can write that 3:5 is equal to x is to 25. Okay, so this way you can arrange it. Now what you can do, 3:5 means 3/5, isn't it, is equal to x upon 25. Now you can again go for the same cross multiplication method. So here x into 5, therefore x will be 3 into 25 upon 5. So here just cut it and you can get x is equal to 15. So therefore the third term is, you can write like this, the third term is 15. Okay, so this way you need to find out the terms whatever is given to you. तो जब भी आपको फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो लाइन वाइज जो भी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से हमको अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिमिलरली you have the fifth problem. Now see, in the fifth problem, in a proportion the second, third and fourth terms are given to you. That means first one you have to find out, isn't it? So these are given 7, 35 and 49 respectively. Find the first term. तो आप क्या करोगे, find the first term मतलब first के वहाँ पे x लिखोगे, ठीक है। So let us do that. Now see what I have written, the numbers. Now first term you are going to find out, इसलिए मैंने first term के वहाँ पे x लिख दिया है। Then 7, 35 and 49. Okay, so corresponding numbers are given to you, second position, third position and fourth position. Okay, so now we can write the ratio like this. Okay, and this is you have to फाइंड आउट योर फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर x के लिए अगेन यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स। सो 7 into 35 upon 49. Okay, now let us go for your calculations. So 7 1 ja 7, 7 7 ja 49, then 7 1 ja 7, 7 5 ja 35. So your x comes as 5. Therefore the first term is 5. So like this you have to find out the terms. So with this we complete off with 8.2 exercise, and it is very easy, isn't it? So let us move to the next topic. Now the next topic is unitary method. So from the word itself, word से ही आपको मालूम पड़ रहा है यूनिट। यूनिट मतलब हमको हमेशा जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो हमको सबसे पहले यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यूनिट का वैल्यू मतलब वन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। सपोज इफ यू आर गिवन विथ 5 कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, आपको 5 पेन्स का कॉस्ट लिखा गया है तो आपको पूछा है कि 20 पेन्स का कितना कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। Okay, so that is your unitary method. In unitary method you have to first find out the value of unit quantity, that is 1. ओके, सो एक का वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा 15 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है और 20 पेन्स का कॉस्ट आपको निकालना है। तो उस समय क्या करना है, आपको सबसे पहले एक पेन का कॉस्ट कितना है वो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। सो the unitary method, the value of unit quantity is obtained first to find the value of the required quantity.
ओके, सो सबसे पहले एक का कॉस्ट, एक चीज़ का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया है, देखिए, इनमें इफ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 335 एंड वी विश टू फाइंड द प्राइस ऑफ 7 बुक्स। सो 5 बुक्स का कॉस्ट दिया गया है, बट वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 7 बुक। दैट टाइम व्हाट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 book, then only we can go for the cost of 7 books. So सबसे पहले 1 book का कॉस्ट निकालेंगे, फिर 7 बुक्स का कॉस्ट निकालेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यूनिटरी मेथड में एक चीज़ का पहले कॉस्ट हमको निकालना है, ठीक है। Then you have the topic as variation. Variation, from the word itself we can know that change. Okay, so change in one quantity with respect to other quantities. So while using your unitary method you have two types of variation. So unitary method में क्या होता है, आपको variation का भी 2 टाइप्स रहता है। उसमें एक है डायरेक्ट वेरिएशन एंड नेक्स्ट अदर वन इज इनवर्स वेरिएशन। सो इन डायरेक्ट वेरिएशन व्हेनेवर यू हैव 2 क्वांटिटीज, ओके, सो यूनिटरी मेथड में क्या, सिंपल यूनिटरी मेथड में यू ओनली हैव 1 क्वांटिटी, ओके, बट हियर इन डायरेक्ट वेरिएशन यू नीड टू सी बोथ द क्वांटिटीज प्रॉपरली। ओके, तो बोथ द क्वांटिटीज मीन्स यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल में, देखिए, 2 quantities are said to be in direct variation if an increase or decrease in one quantity causes a corresponding increase or decrease in the other quantity. For example, if 5 pens can be brought with rupees 20, then 10 pencils can be brought with rupees 40. Then thus more is the amount of money, more is the number of pencils. So the number of pencils and amount of money are direct variation. Okay, now let me explain this. Now see, direct variation. Direct variation means when 2 quantities are said to be in direct variation if there is increase or decrease in one quantity causes a corresponding increase or decrease in the other quantity. Okay, तो मैंने यहाँ पर देखिए एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने कॉस्ट ऑफ पेन लिया है। दैट मीन्स आई हैव टेकन 2 क्वांटिटीज, एक तो पेन है और एक कॉस्ट है। ओके, सो हियर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक पेन का कॉस्ट मैंने कितना लिखा है, 10 रुपीज। ओके, 2 पेन्स 20 rupees. Now so on, if I am having 100 pens then it will cost you rupees 1000. Okay, तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हो, देखिए जिस तरह से पेन का नंबर्स बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे पेन का नंबर्स बढ़ गया ना, यहाँ पे एक पेन था, यहाँ पे 2 पेन था, यहाँ पे 100 पेन्स है। तो as the number of pens are increasing, as number of pens are increasing, कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ पेन्स के साथ साथ कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों साथ में साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो साथ में ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए दूसरा, अब देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स लिखा है 1000, 99 पेन्स इज 990, देन 1 पेन इज 10। तो अभी देख रहे हो नंबर ऑफ पेन्स आर डिक्रीजिंग एंड कॉस्ट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। देखा, जब नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे थे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा था। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ पेन्स इज डिक्रीजिंग एंड cost is also decreasing. So as corresponding things are simultaneously increasing with each other and decreasing with each other, then this is called as the direct variation. तो direct variation में क्या होता है, एक quantity increase होता है तो दूसरा भी increase ही होगा, और एक quantity यदि decrease होगा तो दूसरा भी decrease होगा. So if this is the situation, then that is called as direct variation. Okay, now we will see what is inverse variation.
Now in inverse variation, you have the statement as two quantities are said to be in inverse variation if an increase or decrease in one quantity causes a corresponding increase or decrease or increase in the other quantity. For example, if 5 men can complete a work in 8 days, then 1 man will complete the work into 40 days. Thus, lesser the number of men to complete, more is the number of days required. So number of men and number of days are in inverse proportion. Okay, so let us see. Now see, inverse proportion में कैसे होता है. एग्जाम्पल मैंने लिया है. सो हियर व्हाट वर्क आई हैव टेकन टू कंप्लीट ए पेंटिंग इन हाउस. आपके घर को पेंट करना है, ठीक है. तो क्या होगा, आपके घर में यदि 5 पेंटर्स आते हैं, 5 पेंटर्स आर कमिंग टू पेंट द हाउस, देन व्हाट विल हैपन, 5 men रिक्वायर्स 8 days टू पेंट. तो आपके फुल जो घर है उसको, हाउस को आपको पेंट करने को 5 आदमी आते हैं, पेंटर्स आते हैं, तो आपको 8 days फुल कंप्लीट होता है करने के लिए उनका पेंटिंग वर्क, ठीक है. तो यदि आपके घर में 5 पेंटर्स आते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे पूरे घर को पेंट करने के लिए, 8 दिन लगेंगे, ठीक है. और यदि एक ही आदमी आता है तो आपको इजीली मालूम पड़ता है, एक आदमी आएगा तो क्या होगा, वर्क विल बी स्लो, isn't it? So more number of days will be taken, isn't it? So here you can see one man requires 40 days to paint. तो ये तो इजी एग्जाम्पल है. जितना ज़्यादा आदमी लोग आएंगे उतना जल्दी काम ख़त्म होगा, और जितना कम आदमी लोग आएंगे उतना देर से काम ख़त्म होगा. ये आइडिया हो गया आपको, ठीक है. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि जितने लोग रहेंगे उतने कम दिन में होगा. तो एज द नंबर ऑफ मेन आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग, इजंट इट. सो देखिए, तो एज नंबर ऑफ मेन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, एंड एज नंबर ऑफ मेन डिक्रीजेस, यहाँ पे एक आदमी, देन नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस, इजंट इट. तो ये देखिए, जैसे ये वाला चीज़ इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऑपोजिट हो रहा है दोनों क्वांटिटीज़ में. लेकिन वो जो पहले वाला जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, तो उसमें कैसे हो रहा है, पेन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, पेन डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है ना. तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंकअप थे. लेकिन यहाँ पर आपका अपोजिट हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला इंक्रीज हो रहा है ना. तो ये ऑपोजिट हो रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन. उल्टा होता है, एक ही जगह पे हर एक चीज में उल्टा होता है. तो ये सबसे सबसे इजी एग्जाम्पल है, सो दैट यू कैन हैव द आइडिया. तो ये एग्जाम्पल से आपको इजीली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है. तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको इतना याद रखना है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा. सो दैट विल गिव यू द आइडिया अबाउट द इनवर्स वेरिएशन. So let us move to exercise 8.3 where you have question based on unitary method and direct and inverse variation. Okay, so let us go for first question. If the cost of 6 soaps is rupees 54, then find the cost of 10 such soaps. Okay, so let us first see what are the given quantities. Here cost of 6 soaps are given to you, and you have to find out cost of 10 soaps. So from the given information, first you need to find out the cost of 1 soap. तो सबसे पहले आपको यूनिटरी मेथड में क्या करना है, एक साबुन का कॉस्ट आपको सबसे पहले निकालना है. देन you have to find out the cost of 10 soaps. Okay, so let us go for that. So see students, I have written the statement. Cost of 6 soaps is equal to rupees 54. Cost of 1 soap will be 54 divided by 6, that is giving you rupees 9. So each soap is costing you rupees 9. Now cost of 10 soaps will be 10 into 9. So that is giving you rupees 90. So this is how you need to go for your unitary method. Now second question is Sia covers a distance of 7 meters in 90 equal steps. What distance will she cover in 270 steps?
So as you have read the question, here you need to find out the distance, isn't it? So first you have been given with 90 equal step covers 70 meter distance. So one equal step will cover how much distance, and after finding out one equal step, then you can go for 270 steps. Okay, so let us go for it. Now see the statements. 90 equal steps to cover 70 meter distance. So one step will cover 70 upon 90, that is 7 upon 9. 7 upon 9 कैसे आया? हमको ये 0 0 cancel कर दिया. Okay, so this will give you 7 upon 9. Now 270 steps will cover 7 upon 9 into 270. So 9 3s are 27. So this is giving you 7 into 30, and that is your 7 into 30 will give you 210 meter. So 270 steps can cover 210 meter distance. So you can write the statement. CR can cover 210 meter distance in 270 equal steps. Then third question, see, if 45 kg of paper is required to make 500 notebooks, then how much paper is required to make 700 such notebooks? So what you will write? For 500 notebooks, 45 kg of paper is required. So for one notebook, how many paper is required? एक notebook के लिए कितना paper चाहिए? So that will be your 500 upon 45. Okay, 500 upon 45. Sorry, for I have written the statement. So I have told you 500 divided by 45. It is 45 divided by 500. Okay, so please correct it. So it is 45 divided by 500. So as we are writing 45 kg here, so that is why we are going for one notebook, that is 45 upon 500. So this can be written as 5 9s are 45, you know that, and this is your lowest term. Okay, so 9 upon 45. So 5 for 700 notebook, how many kilos of paper is required? So it will be this multiplied by 700. So this will come as 9 into 7. So this will come as your 63. So your statement will be, so you can write the statement like this. So let us move to next question. Now next question you can do of your own. So यहाँ पे आपका देखिए, car uses 30 liters of petrol to cover a distance of 375 kilometer. Okay, so 30 liters of petrol to cover distance of 375 kilometers. How many liters of petrol will it use to cover a distance of 1200 kilometers? Okay, so here you are going to find out कि 1 liter for covering 1 kilometer distance, how many liters of petrol is required. So then you can go for 1200 kilometers. So ये आप as a homework you can try this. तो इसमें क्या करोगे आप, 375 लिखोगे और फिर 30 liters of petrol is required. Then 1 kilometer will give you how much petrol, and then you need to find out how much petrol is required for distance. Now the next question, that is question number 5, you have an alloy is formed by mixing 4.5 gram copper and 2.8 gram zinc. How much alloy of similar kind can be formed by using 13.5 grams of copper? Okay, so here you have two quantities, that is copper and zinc, and you need to find out the amount of alloy, that is how much alloy that can be formed by using 13.5 gram copper. So let us see how we can do it. Now see students, what we can write. So alloy formed by mixing.
क्या क्या एलॉय फॉर्म किया था हमने? 4.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कॉपर का है तो लेट अस राइट दैट ऑफ कॉपर। तो आपको ये सिंबल्स तो पता है कॉपर का और जिंक का, है ना? सो दिस इज 4.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्लस 2.8 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है? तो दैट विल गिव यू टोटल ऑफ 7.3 ग्राम्स ऑफ एलॉय। तो एलॉय का वेट टोटल कितना हो गया? 7.3 grams. Now what I have written in the next step, 4.5 gram of copper forms 7.3 grams of alloy. So यहाँ पर क्या था? 4.5 ग्राम ऑफ कॉपर था, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगी? 1 ग्राम ऑफ कॉपर. So 1 gram of copper will form, what is the weight of the alloy? Then what you need to do? 7.3 divided by 4.5. ओके, सो ये जो डेसिमल्स है ऊपर नीचे, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों में देखिए एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस 73/45. ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या होता है, ये कैसे लिखते हैं हम? देखिए 73/10 देन 45/10 इस तरह से लिखते हैं ना, और फिर 73/10 मल्टीप्लाइड बाई 10/45, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 73/45. ओके, सो 1 kg ऑफ कॉपर विल गिव यू 73/45 grams of alloy total. So now 13.5 gram of copper will give you how much? So this 73/45 multiplied by 13.5. So this way you need to go for calculation. अभी कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप देखिए अभी 73/45 इंटू 13, ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस तरह से 135/10. ओके, नाउ यू कैन गो फॉर कैलकुलेशंस. देखिए 5 9 जा 45, देन 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. ओके, नाउ 9 3 जा 27. So you have 9 3 जा 27. Now go for calculation. कितना होता है? 3 3 जा 9, 219/10. तो कितना हो जाएगा? देखिए 219/10. ओके, सो 219/10 कैन बी रिटर्न एज व्हाट? इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो 21.9. So you have 29.1. So you can write that 21.9 grams of alloy can be formed. So this way you can write the statement answer 21.9 grams of alloy can be formed. So this is your answer. तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये आपको प्रॉपर करना है, ठीक है? तो डेसिमल का कैलकुलेशन है. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन. Now the rest 3 question is similar type of question. A transport company charges per box to carry 15 to 25 boxes. A transport company charges per box to carry 15 to 25 boxes. If it charges rupees 2000 to carry 25 boxes, how much will it charge to carry 18 boxes? So again, what you are having, how many boxes? 25 boxes. Charges is 2000. So for 18 boxes, how you need to find out the charges. So for 25 box 2000. So for 1 box kitna, and for 18 box you can already find out easily, isn't it? Now the next question, the weight of 12 chairs is 60 kg. So 12 chairs is weight is 60 kg. So 1 chair will have the weight of how much? Then 18 chairs will have how much weight?
that you can find out. Then Ajay earns rupees 10,680 in 12 days. How much will he earn in 18 days? So 12 days he earns 10,680. So 1 day में कितना वो earn करेगा और फिर 18 days में वो कितना earn करेगा. So that way you are going to do the questions. So this 3 and this 4th questions, 4 question means total of 4 question is homework to you. Just go for it and I think you will be able to do it. Okay, so with this we complete off with exercise 8.3. One more thing I have forgotten to tell you, that here one information is there, that is product of extremes is equal to product of means. So as you know that this is your proportion. ओके, तो एक्सट्रीम्स बोलेंगे तो ये जो है फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये दोनों एक्सट्रीम साइड के हैं और मीन मीन्स ये बीच वाले. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सट्रीम्स क्या है, 7 into 66 and mean is 33 into x. So this is one of the formula to remember. Okay, so आपके MCQs में ये फॉर्मूला आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया है. ठीक है, so you can go for this method also for taking out your x. So please go through the questions, mental maths, practice time, everything, and try to solve the questions. Thank you.